Welcome back to our podcast, Spanish with English. Khush Aamdeed, Spanish with English mein dobara. Today, we're diving into a topic that every beginner faces, common mistakes in Spanish. आज हम हिस्पानवी ज़बान में beginners की आम गलतियों के बारे में बात करेंगे. Absolutely. Let's start with our first mistake, the confusion between ser and estar. Ghalti number 1, ser और estar में confusion. Right. Ser is used for permanent states, while estar is for temporary conditions. Ser मुस्तकिल चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि estar आरज़ी हालत के लिए. Can you give us some examples? Sure. For instance, soy estudiante means I am a student, and estoy cansado means I am tired. मैं तालिब इल्म हूँ और मैं थका हुआ हूँ. Great examples. Now let's move on to our second mistake, word order. Ghalati number 2, alfaz ki tartib. In Spanish, adjectives typically come after the noun. Hispanvi में adjective अक्सर noun के बाद आता है. For example, casa grande means big house. Exactly. And that leads us to our third mistake, word-to-word translation. Ghalti number 3, lafz be lafz tarjama. Yes, Spanish has its own natural structure that doesn't always align with English. Hispanavi की अपनी साख्त होती है. Let's practice. Repeat after me. Soy estudiante, estoy bien, casa grande. Making mistakes is part of learning. गलतियां करना सीखने का हिस्सा है. Up next, we'll tackle the past tense in our next episode. Agli kist, mazi ka zamana. Now, moving on to episode 17, where we'll explore basic past tense. आज हम हिस्पानवी में माजी का आसान तरीका सीखेंगे. For example, comí means I ate, and fui means I went. मैंने खाया और मैं गया. And estudié means I studied. मैंने पढ़ा. Let's practice these. Repeat. Comí, fui, estudié español. Now you can talk about yesterday. अब आप कल के बारे में बात कर सकते हैं. Next up, we'll discuss feelings and health in episode 18. आज का मौजू है एहसासात और सेहत. Common words like feliz, triste, and cansado are essential. खुश, उदास, और थका हुआ. And useful sentences like Estoy feliz and no me siento bien are day-to-day phrases. मैं खुश हूँ और मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा. Let's repeat those phrases together. Now, let's move on to episode 19, which is all about Spanish at work and school. आज हम काम और स्कूल के लिए आसान हिस्पानवी सीखेंगे. Vocabulary like trabajo and escuela is so important. काम or school. And practical sentences like trabajo aquí and necesito ayuda. These phrases sound polite and professional. ये जुमले मुअद्दबाना और professional लगते हैं. Finally, in episode 20, we'll listen to a mini Spanish story. आज हम एक मुख्तसर हिस्पानवी कहानी सुनेंगे. Let's listen again in Spanish. Juan va al mercado. Stories help you understand Spanish naturally. कहानियाँ ज़बान समझने में मदद देती हैं. You're doing great. आप बहुत अच्छा कर रहे हैं. Thanks for tuning in. We can't wait to see you next time.